Hello, dear students. Welcome back to a news channel. Students, let's go to the articles of the day. So, in the first article, we are going to talk about Earth's spinning mystery. Okay. Imagine this. One day, scientists notice that Earth finished its spin slightly faster than usual. Just a few milliseconds, but still faster. ठीक है, भले ही थोड़ा सा मिलीसेकेंड हो, few milliseconds हो, लेकिन faster है. So, on July 9, the Earth spun 1.34 milliseconds faster than the normal 24 hours. So, what does this mean? Well, students, one day is the time the Earth takes to complete one full rotation. ये तो हमें पता है ना? तो normally that comes out to be 86, more than 86,400 seconds. ओके और 24 आवर्स, तो 24 आवर्स लगता है अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, राइट? अब वी आर नोटिसिंग दैट सम डेज आर गेटिंग स्लाइटली शॉर्टर. ओके, सम डेज आर गेटिंग स्लाइटली शॉर्टर, छोटे होते जा रहे हैं. एंड नॉट इनफ फॉर अस टू फील इट. यू वोंट मिस योर स्कूल बस, बट इट्स अ बिग न्यूज इन द साइंस वर्ल्ड. नाउ पहले तो ये समझना है कि अर्थ आकर इतना स्पिनिंग अर्थ की फास्ट क्यों हो गई है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? सी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी रीजंस एंड ऑल कनेक्टेड टू फिजिक्स एंड नेचर. व्हेन वी से अबाउट अर्थ, अर्थ का जो कोर है, राइट? अभी मेंटोरशिप सेशन जब हुआ था, सो वी हैव लर्नड रिगार्डिंग क्रस्ट, मैंटल, कोर. So the core, which is deep inside Earth, the liquid core, it is always moving. And that movement can change how Earth spins. Just like how a skater spins faster when they pull in their arms. Okay, तो एक तो फैक्टर हो गया जो लिक्विड कोर है, राइट? सेकेंड इज एटमॉस्फेरिक पैटर्न, एटमॉस्फेरिक विंड्स. जो विंड पैटर्न है स्पेशली अपर एटमॉस्फेयर में, अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं, जो एकदम अपर लेवल पर हो, तो वो क्या करते हैं? इट कीप्स ऑन पुशिंग एंड पुलिंग ऑन द प्लैनेट, जो विंड है. ठीक है, तो इसकी वजह से भी अर्थ का रोटेशन अफेक्ट होता है. और मून की ग्रेविटी मेन रीजन हैज टू डू विद मून्स ग्रेविटी. सी, मून्स ग्रेविटी, इट क्रिएट्स टाइड्स इन द ओशन. मून की ग्रेविटी की वजह से टाइड्स होते हैं ना ओशन में. ओशन में जो टाइड्स क्रिएट होते हैं वो किस लिए होते हैं? मून की ग्रेविटी की वजह से. So these tides can slow the earth down, but changes in their movement can also, temporarily speed it up. So that is again another reason. ऊपर से अब हमें एक और फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का. यस, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो another factor. So melting ice caps can also affect Earth's rotation. See, as water moves from the poles to the equator, the mass shifts. Okay, slightly. So it's slightly speeding up the spin. So it's like spinning with weights in different parts of your body. Of course, it's going to change the balance. Right? But here's the twist. Over millions of years, हुआ क्या है? अगर हम overall की बात करें, the earth is actually slowing down, not speeding up. In the dinosaur era, जब डायनासोर थे, a day was only, it was only 23.5 hours long. 23.5 hours long. So why is it slowing down? Because the moon is moving farther away. It is moving approximately 3.8 centimeter per year. Okay? And as the moon drifts away,
Earth's spin slows. So this make the day longer in the long run. But recently, scientists also noticed one thing, that Earth is temporarily spinning faster. And that's the exciting part. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम few milliseconds, who care about few milliseconds? Well, students, it matters a lot in science and technology. Because GPS that we use for navigation, GPS satellites, it need exact time to give accurate locations. And there are also, atomic clocks. Atomic clocks क्या करते हैं? They control time around the world. Okay. So जो उनके अकॉर्डिंग ही एटॉमिक क्लॉक्स के अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट होता है. एंड ऑल्सो इंटरनेट सिस्टम्स नीड सिंक्रोनाइजेशन. So, in fact, to keep time accurate, scientists sometimes add a leap second to our clocks. But now they need to remove a second, something that's never been done before. So, that's called negative leap second. मतलब कि जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो हमारी क्लॉक्स है उसको एक्यूरेट करने के लिए एक लीप सेकेंड उसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है, टाइम में एक सेकेंड ऐड कर देते हैं. पर अब क्या होगा, क्योंकि अर्थ की स्पिनिंग चेंज हुई है, तो उसके चलते नाउ दे नीड टू रिमूव अ सेकेंड. और ऐसा कभी हुआ नहीं है, राइट? सो व्हाट कम्स नेक्स्ट? वेल, वी डोंट नो whether this faster spin is a permanent change or a temporary hiccup, but it just shows one thing, that earth is not as stable as we think. It actually moves, it breathes and changes just like everything else in nature, right? So, students, uh, on a lighter note, it's actually a reminder that even our time isn't set in stone. It's pretty cool, right? Now, students, let's head to the skies where technology meets defense. We're going to talk about Patriot missile system. And this Patriot missile system is a high-tech air defense system built by US company Raytheon. Okay? So Patriot, it stands for Phased Array Tracking Radar. Tracking radar to intercept on target. So it's basically designed to detect incoming threats. जैसे मिसाइल आ रहा है या फिर एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. Or it can also launch missiles to destroy those threats mid-air. So basically it acts like what? It acts like a shield in the sky. Okay. अब ये पेट्रियट सिस्टम काम कैसे करता है? इट हैज सबसे पहले तो उसमें एक रेडार है जो 24/7 काम करता है. ओके. सो यस. Okay. So it has a radar that watches skies 24/7. Okay. And it also has launchers that fire missiles and a control station to make decisions fast. It also has trucks and teams to move it around. So, ये जो defense system है, what it can do, it can actually shoot down many types of missile. जैसे fighter jet हो गया, cruise missile हो गया, ballistic missile हो गया, and now even hypersonic missile. हाइपरसोनिक मिसाइल कौन होते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होते हैं दैट फ्लाई फास्टर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, उसकी स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा जो तेज चलते हैं उसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल. ओके. तो इसमें दो टाइप की मिसाइल सिस्टम है. फर्स्ट इज PAC-2. PAC-2, it blows up near the target, and PAC-3, it hits the missile directly, more accurate and powerful. तो यूक्रेन को अभी हाल ही में क्या रिसीव हुआ है? PAC-3 वर्जन ऑफ मिसाइल सिस्टम. ओके. तो थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं कि क्या किस
किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है? सी, सिंस 2022 यूक्रेन हैज फेस्ड thousands of missile attacks from रशिया। रशिया से thousands of missile attacks यूक्रेन ने फेस कर रहा है 2022 से। तो रशिया क्या टारगेट कर रहा है? रशिया टारगेट कर रहा है पावर स्टेशन, रशिया टारगेट कर रहा है रेलवेज, हॉस्पिटल, सिटीज, एंड दीज अटैक्स कॉज ब्लैकआउट्स, इट कॉज फियर एंड डिस्ट्रक्शन। दैट्स व्हाई यूक्रेन आस्क्ड फॉर पेट्रियट systems to shoot down Russian missiles before they hit. Okay? तो 2020 मई 2023 में भी इन्होंने एक टारगेट लाइक it's there. Raytheon has not yet confirmed if it is able to do so. In May 2023, the US confirmed Ukraine has used it to shoot down a Russian Kinzhal missile, which Moscow claims is hypersonic. ओके, तो ये जो मिसाइल है ये रशिया की है। तो यूक्रेन ने शूट डाउन किया था मई 2023 में। तो रशिया क्या कहता है कि इसकी जो मिसाइल है वो अनस्टॉपेबल है। अब इसको भी रोक दिया था ऐसा कहना है। तो मे बी ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है। ओके, सो दैट वाज अ बिग विन फॉर यूक्रेन्स डिफेंस, राइट। नाउ हु सेंड दीज मिसाइल्स? किसने सेंड किया? ऑफ कोर्स ये यूनाइटेड स्टेट ने सेंड किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी हैव बीन leading suppliers of Patriot systems to Ukraine. So recently what happened? US moved interceptors from Israel to Ukraine. Israel से यूक्रेन मूव कर दिया गया। एंड जर्मनी gave full Patriot batteries. NATO allies, they also, and even the European Union also helped coordinate funding. अब बहुत सारे कंट्रीज हैं दे आर ऑलरेडी यूजिंग द सिस्टम, जैसे पोलैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, जापान हो गया। इट्स एक्सपेंसिव बट क्वाइट पावरफुल। ओके, तो इसका कॉस्ट स्टूडेंट्स देखो, आप न्यूज देखोगे ना आपको यू विल बी शॉक्ड। इसका जो कॉस्ट है, a newly produced single Patriot battery costs more than 1 billion, including 400 million for the system and 690 million for the missiles in a battery, according to the center. So every time they launch a missile, they are actually spending the same as a big school or hospital. बहुत उससे भी ज़्यादा, right? So even lives are at stake. Countries are still willing to pay. And Ukraine says that every missile it stops, it is actually saving people's lives. It is promoting peace. Okay? The students' Patriot system isn't just about defense. It's also about international cooperation. आप देख सकते हो कि देखो कि यूक्रेन के सपोर्ट में, इजराइल के सपोर्ट में यूएस आया है, जर्मनी आया है, राइट। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही चीजें कोऑपरेट ऑपरेट होता है। So, and for students like you, it's a chance to understand how real life conflict connects with engineering, diplomacy, and global politics. Okay, so students, that's all for today. If you found this episode exciting, share it with your classmates and don't forget to subscribe for more such deep dives into the real world. Until next time, stay curious, stay informed, and remember, knowledge is your best shield.